Now, please confirm if the PPT is visible to you. Is the PPT visible? Can I start? Thank you. Thank you very much. So, good afternoon once again to all of you. My name is Vikas, and I welcome you all. And I think this is the first online session hosted by Patliputra Sahodaya in this academic session of 2024 and 25. So, for today's session, we are going to discuss on a very new concept in the field of teaching, that is AI, artificial intelligence. So my topic is artificial intelligence in teaching and the future of education. As the quote you can see, harnessing artificial intelligence for enhanced learning experiences. Why I have chosen this topic, or why this topic is so important, you all are knowing, I think. In today's world, when we see anything, whenever if you will start scrolling internet, if you will start searching anything on Google, you will see a very vast role of AI. If you are using social media, the social media is tracking you through AI. The various apps we all use, we all have been using a app named Ola for booking our cabs, for booking bikes, Rapidos, for going from one place to another. And now such kind of apps have also started using AI. Ola has built its own AI named Kritrim. Google has started its own AI named Gemini. And definitely we all know about ChatGPT. So what I thought, that why don't we start using it in the field of teaching? Or have you imagined what will happen, how the teaching process may change if teachers start using AI for teaching? Yes, ma'am. ChatGPT really works if you do a correct use. So, those who are not using, you may imagine that can AI help? क्या artificial intelligence आपकी मदद करता है? I can see some comments about no audio or low voice. For low voice, I would have to tell, please increase your volume. And if there is no audio, kindly check your internet connections. Yes. Okay. So let's talk about AI first. Then in the last part of the session, I'll do some demonstration also. I'll use ChatGPT for you. I'll share my screen. I'll use Gemini, the AI of Google, and we will try to take help of these AI in making our task easy. Like I may tell the AI to prepare a lesson plan for me, and so that I would not have to give much more time on doing the paperwork in making a lesson plan. Maybe I can ask AI to prepare a small question paper for a class test from any particular chapter. So we will do some demonstration part in the last of this session, but the first, let us know what is AI. So we all know the full form of AI. AI is artificial intelligence. It is basically a branch of computer science that aims to create systems that is capable of performing tasks that typically require human intelligence. See, when computer was developed, it was merely used for calculations, very small basic calculations. But gradually it developed and it started helping us in a lot of manner. Then a time came when people started to think that nah, computer is also not that much efficient that it help as per the human intelligence. But now, thanks to our technical team, thanks to the software engineers, they have developed an
artificial intelligence. Our intelligence which is built in computer system and which typically have the knowledge, which typically have the idea that how a human brain thinks. Rajan sir, I respect your question. What is the next step of AI? We will discuss it. है ना? We have just started. Merely, I have passed 3 or 4 minutes. मेरा बोलना अभी 3-4 मिनट ही हुए हैं. So I respect your question, but we will take all the queries and questions in the further. है ना? लास्ट के 10 मिनट हम लोग बचा के रखेंगे क्वेश्चंस के लिए. Now, so आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी करे so that ह्यूमन को हेल्प मिले. These tasks include reasoning, learning, problem solving, perception, language understanding, and more. So, AI is an umbrella term that covers various technology. You have to understand. When we talk about AI is an umbrella term. Every AI tool does not help or cannot help you in each and everything. Like if we talk about ChatGPT is for chat. So ChatGPT may answer your questions. ChatGPT may give you some written help, but it will not prepare a PPT for you. It will not create a PDF file for you. It cannot edit a video for you. Or it cannot do a programming for you. In the same way, we have an AI tool named Tomb.app. We have Gamma.ai. These are some tools for creating PDFs, for PPTs, and many more. So these tools are limited to that only. They cannot chat with you. They will not help you in chatting. They will not give you general information. What they can do, they can prepare PPT for you. If you will tell them that what is the topic, what is the subtopic, how many slides you want, what is the main agenda, they can prepare it. So AI is an umbrella term. So machine learning, deep learning, natural language processing, these are all included in AI. Machine learning, for example, uses algorithm trained on data to create models to enable computers to make decision and prediction. Whenever we start using an AI tool, the thing that is amazing in AI is that it can think or it can process your information more than a simple software. So that makes it more efficient. So that efficiency comes from machine learning. What is deep learning? A subset of machine learning it is. Involves neural network, which many layers that can learn complex patterns in large amounts of data. Let me show you my entire screen for a while so that I can give you an example, or I may say demonstration, of how an AI tool helps through detailed learning or deep learning. So my screen is visible to you right now. Can you see Copilot? Please write in the chat box if you can see the Copilot beside the PPT. Yes. So you may see I have been checking many things. So you may see, is matter around us pure, atoms and molecules, structure of atoms. So Copilot is an AI that is already built in my PC. So let me ask some questions to it. Let me tell you, let's ask about AI only. Explain the use of AI. The field of education at school level.
Now it's a very simple question. If you will put this question on Google, Google may refer you to various websites where you can find the possible answers. But what this Copilot AI is doing, Copilot is creating its own response. And now you can see the response is being written. You see, personalized learning, automated grading, and you may also see the reference from where it is taken. Aquaruasia.ci, OECD, iLibrary.org, webforum.org, UNESCO.org. So it is telling you that yes, I am going to these websites, I am searching for the data you have been asking, and I'm copying that data and I'm pasting it here to you. So this is what AI can do. AI अब आपके 2-3 स्टेप्स बचा रहा है. पहले आप क्या करते थे, आप गूगल पे जाते थे, आप गूगल पे सर्च करते थे, गूगल आपको कुछ इस टाइप के वेबसाइट्स दिखा देता, फिर आपको वहां जाना होता और आपको क्या करना होता, वहां पे सर्च करना होता, फिर आपको पढ़ना होता. बट यहाँ एआई ने आपकी हेल्प कैसे करी, एआई ने वो सारी चीजें ढूंढ ली, उन वेबसाइट्स पे एआई खुद गया है, वहां से सर्च किया उन चीजों को और लेकर आया है आपके लिए. You may also see written 3341. 3341 tells you that it has 3 other sources जहां पे आपको रिलेटेड चीजें मिल सकती हैं. एंड इफ यू विल क्लिक ऑन दैट, यू कैन सी मेरी जो टाइप ऑफ क्वेरी थी, मेरी टाइप ऑफ क्वेरी से रिलेटेड जो रेस्पॉन्स किसी वेबसाइट पे दिए गए हैं, वो सारा एआई ने मुझे डाइवर्ट कर दिया है. सो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की हेल्प से एआई जो है वो अब इन चीजों को करने में एफिशिएंट है. Let's come back to the PPT again. See, I am regularly seeing a very particular comment that please raise your voice. I'll try definitely. But पूरे 1 घंटे के लिए अगर मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँ तो मैं कल क्लास में नहीं बोल पाऊंगा आपने, है ना. तो मेरी आवाज अभी उतनी है जितनी जनरली 5 लोगों के बीच बैठ के हम लोग बातें करते हैं तो हमारी आवाज होती है. सो दैट मेरी आवाज आपको चुभे नहीं कान में. वॉइस इज कमिंग. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. So that this is what I was telling. AI is built with the help of deep learning, machine learning. So AI applications are widespread and can be found in everyday life, from voice assistants like Siri and Alexa to recommendation systems, settings used by Netflix and Amazon. It's also used in more complex tasks such as driving autonomous vehicles, assisting in medical diagnosis, and powering chatbots and virtual assistant. Now, this you have to understand this also. हमने चैट जीपीटी के बारे में ज्यादा जानना और समझना तब से स्टार्ट किया, सॉरी एआई के बारे में जानना और समझना तब से स्टार्ट किया जब से चैट जीपीटी आई, है ना. और हम में से शायद कईयों को लगता हो कि चैट जीपीटी हैज स्टार्टेड एआई, बट इट इज नॉट ट्रू. एंड Google Maps tell you that you are going to the wrong direction, please take a U-turn and take this road. This is also a very basic form of AI. When your Google Assistant tells you that, yes, I am listening to you, please help, please tell what is your query or concern, that is also a basic form of AI. Like, I can give you an example of Google Assistant also. In your phone, if you simply click the Google Assistant shortcut button and say, oh, okay, Google, call this person, tell the contact name, Google Assistant will call it. So this is also a kind of AI. How Netflix, Amazon, or the other OTT platforms use recommendation settings. The types of video you watch, they recommend you the same kind of videos. It also happens in YouTube, in Instagram or Snapchat, wherever you see videos or reels or shorts. So they are also using kind of AI algorithms to sort these things out.
So the field of AI is rapidly evolving with new advancements and applications emerging regularly. Sorry for the disturbance. I think the network was unstable. Okay. So the field of AI is rapidly evolving with new advancements and applications emerging regularly. It holds the promise of significant benefits, but also poses challenges and ethical considerations that need careful management. So, in today's topic, we will definitely learn how to use AI, but we also have to be careful because the capabilities that AI is gaining can be sometimes dangerous. So, let's have the introduction of to AI in the field of education. So AI has become a transformative force across various sectors, fundamentally altering how we work, we live, and we learn. Its emergence in education is particularly noteworthy, promising to revolutionize traditional teaching and learning paradigm. Now, some of you may think that how will AI help in teaching? क्या एआई आपके बदले नोट्स बना देगा? यस, बना देगा. क्या एआई आपके बदले क्वेश्चन पेपर क्रिएट कर देगा? यस, कर देगा. क्या एआई आपके लिए एक सिमुलेशन वीडियो क्रिएट कर सकता है जिसको आप क्लास में अपने स्मार्ट बोर्ड पे दिखा सकते हो? तो उसका भी आंसर यस कर सकता है. क्या एआई आपके चैप्टर से रिलेटेड पीपीटी क्रिएट कर सकता है? सेम आंसर यस, कर सकता है. सो एआई is a very transformative thing, especially in the field of education. What is needed is the teachers, we have to learn to use it. Like we have learned to use the reference books. We carry the best reference book in of our subject. We read the best reference book to gain the best knowledge of the topic or the subtopic that we are going to teach. Whatever the subject you may have, and we impart the knowledge to our students. So now we have to learn to use these AI tools also, because what I commonly see that now many schools have smart boards, and what teachers do, आप दिल पे नहीं लेंगे, आपको अगर बुरा लगे तो मैं पहले सॉरी बोल देता हूँ उसके लिए, but what I have commonly see is that teachers, school have provided the smart board. What teachers do, they go into the classroom, they click on the whiteboard section, और white board section में बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर लेते हैं, इंक कलर व्हाइट कर लेते हैं, एंड दे स्टार्ट टीचिंग. सो व्हाट बेसिकली व्हाट हैज चेंज्ड इज दैट वो चौक वाला ब्लैक बोर्ड हट गया है, एंड उसकी जगह पे क्या आ गया है? स्मार्ट बोर्ड वाला ब्लैक बोर्ड आ गया है. कुछ टीचर्स उसमें 2-4 कदम आगे बढ़ते हैं, वो व्हाइट इंक की जगह कलरफुल इंक लगाते हैं. Some teachers now use videos to teach. Some teachers have now started preparing PPTs for their each class, just like the lesson plan. Now, understand, teacher A जो स्मार्ट बोर्ड यूज करते हैं, बस ब्लैक बैकग्राउंड व्हाइट इंक से पढ़ा देते हैं लिख लिख के.
टीचर 2 जो बीच बीच में बस कुछ वीडियोस ऐड कर देते हैं, दिखा देते हैं। एंड टीचर 3 वो स्टार्ट करते हैं अपनी पीपीटी के साथ, पीपीटी पे ही एनोटेट करते हैं, जहां उनको लिखने की जरूरत है वहां वो लिखते हैं, समझाते हैं, बीच में वो वीडियोस इंक्लूड करते हैं। अगर साइंस टीचर है तो वो वर्चुअल लेबोरेटरी भी विजिट करा देते हैं बच्चों को, सिमुलेशन वीडियोस दिखा देते हैं। व्हाट डू यू थिंक विच विल बी मोर इफेक्टिव? When we start talking about learners, kind of learners, we always say there are mainly four kinds of learners: VARK, visual, auditory, reading, writing skills, and kinestheticals. So, but when we start teaching, we focus on A, auditory, कि सुन के जो समझ में आ जाए वो ठीक है। वी वाले बोर्ड पे जो दिखता है थोड़ा बहुत लिखा हुआ उससे समझ जाते होंगे शायद, या जो हम लोग डायग्राम बना देते हैं उससे समझ जाते होंगे। बट व्हाट अबाउट अदर्स? और आर वी एबल टू मेक आवर क्लास इंटरेस्टिंग? आर पेरेंट्स ऑलवेज से, गार्जियंस ऑलवेज से, टीचर्स की भी कंप्लेन होती है कि बच्चे अब ध्यान नहीं देते पढ़ाई पे। सी, आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले बच्चे ध्यान इसलिए दे देते होंगे पढ़ाई पे क्योंकि स्कूल के बाहर की दुनिया में ना उनके पास काम होता था। काम इन द मीन्स पेरेंट्स ने कुछ कहा कि हाँ ये वाला काम करना है तुमको, थोड़ा घर का हेल्प कर दो, कुछ और काम कर दो। फन के लिए बस दोस्तों के साथ खेलना होता था। तो इफ यू आर फ्रॉम बिहार, यू नो कि गर्मी ज्यादा पड़ती है तो धूप में नहीं खेल सकते, शाम में ही खेल सकते हो, तो बाकी के टाइम में पढ़ना ही है उनको, और क्या ही करेंगे बेचारे, या सोना है या घर ही पे जो करना है करना है। बट नाउ द स्टूडेंट्स आर वेरी मोर थिंग, उनके पास फोन है, उनके पास लैपटॉप है, उनके पास टैबलेट है, और उसमें एक अलग दुनिया है जो काफी इंटरेस्टिंग है। और उस दुनिया में जो इतने जितने भी लोग हैं वो लगे हैं दिन रात उसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने में। बट हमारी ये जो पढ़ाई वाली दुनिया है ना, इसके जो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, द टीचर्स, वी हैव स्टॉप्ड आवरसेल्फ। हमने किताबों तक ही अपने को रोक रखा है। हमारा नॉलेज सही है, मैं नॉलेज की बात नहीं कर रहा कि हमारा नॉलेज कम है, सब्जेक्ट में हमारी पकड़ नहीं है। अब उसको प्रेजेंट करने का तरीका चेंज करने की जरूरत है। हमें बच्चों को समझानी वही चीज है, बट उसको थोड़ा अलग तरीके से समझाने की जरूरत है। जो पहले बस चौक से काम चल जाती थी, जो पहले बस मार्कर से काम हो जाता था ना, अब उसमें आपको कुछ वीडियोस लगाने की जरूरत है, कुछ एआई टूल्स को इंक्लूड करने की जरूरत है, सो दैट वो चीजें इंटरेस्टिंग बने। कुछ ऐसी चीजें बताने की जरूरत है कि बच्चा जब घर पे जाकर फोन छुए ना, तो उसको याद है कि अच्छा अच्छा सर ने कहा था कि ऐसा करके देखना देखना बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज दिखेगा, और वो ट्राई करे। सी, दिस इज द हार्श रियलिटी दैट आप स्क्रीन टाइम बच्चों का कम नहीं करा सकते, क्योंकि बच्चे एक बार स्कूल से घर चले जाते हैं ना तो फिर वो आपकी नहीं सुनते। बट व्हाट यू कैन डू कि बच्चे जब स्क्रीन देख रहे हैं तब भी कुछ सीखें। लाइक मेरे फोन में केमिस्ट्री के लिए एक वर्चुअल लैब्स करके एक ऐप है। आई एम अ टीचर ऑफ केमिस्ट्री, सो वेन एवर आई गो टू माई क्लास एंड आई टीच स्टूडेंट्स, मैं उनको जब बताता हूँ कि ये वाली ऐप है आप देख सकते हो, या मैं अपने स्मार्ट बोर्ड से कनेक्ट करके उनको जब सिमुलेशन वीडियोस दिखाता हूँ, कुछ वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट्स दिखाता हूँ, तो बच्चे जाते हैं घर पे, उस ऐप को इंस्टॉल करते हैं और उसके बेसिक वर्जन पे खुद भी ट्राई करके देखते हैं। सो कई सारे फायदे मेरे मेरे पास अब उसके, दैट ऐप यूजेस एआई। और अब क्या हो रहा है कि मुझे इस बात का डर नहीं है कि कोई बच्चा एसिड अपने हाथ पे ना गिरा दे, क्योंकि अब वो वर्चुअली कर रहा है। साथ ही साथ मुझे इस बात का भी डर नहीं है कि हम इसको ज्यादा प्रैक्टिकल्स नहीं कराएंगे तो शायद सीखे नहीं, क्योंकि वो सीख रहा है। वर्चुअल लैब्स को प्रमोट किया ही जा रहा है, मैं कर रहा हूँ, वो सीख रहा है। हम लोग उनको एक्चुअल लैब्स में भी लेके जाते हैं, बट चीजें ऐड कर दी हैं मैंने with the help of AI, and this is what we need to do. AI emergence across sectors, we all have been, you just have to search it on Google, virtual lab app। आपको कई सारे ऐप मिलेंगे, इंस्टॉल इट, ट्राई इट, आपको जो अच्छा लगे आप उसको रखिए। So AI journey began as a concept in computer science aiming to create machines capable of intelligent behavior. Over time it has permeated various industries, enhancing capabilities and efficiency in healthcare. AI assists in diagnosing diseases and personalizing treatment plans. See, when I got to know that I have to take this session on AI, I was searching for a particular news clip, but I couldn't find it. But मैं आपको बता देता हूँ. When
जीपीटी की जब बातें हो रही थी ना, चैट जीपीटी 4.0 जब पीक पे था अपने, when it started approximately 1 year ago, I had seen a news that a pet owner, उसका जो पेट ऑनर थे, कुत्ते को उन्होंने पाल रखा था, उनका कुत्ता काफी ज्यादा बीमार था, and the doctors, they were not able to find the actual disease, and that is why they were definitely not trying to uh, find the cure. So एक दिन परेशान होकर ना ऑनर ने क्या किया, पूरे के पूरे मेडिकल डिस्क्रिप्शंस जितने भी डॉक्टर्स ने लिख रखे थे, रिपोर्ट्स वगैरह जो थे, वो सारी चीजें उसने चैट जीपीटी को इन्फॉर्म कर दी, एंड द ओनर आस्क्ड चैट जीपीटी दैट व्हाट मे बी द प्रॉब्लम। नाउ डॉक्टर्स ने बोल रखा था कि शायद 1 महीना और जिंदा रहेगा क्योंकि बीमारी ठीक हो नहीं रही और उसके बाद इसका कुछ नहीं हो सकता। ओनर ने चैट जीपीटी से पूछा, चैट जीपीटी टोल्ड इट कि ये वाली बीमारी है और इसके लिए ना ये दवाइयां आती हैं। ओनर ने वो दवाई 1 हफ्ते खिलाई, कुत्ते को ना सुधार होने लगा। देन अगेन दे वेंट टू द डॉक्टर एंड दे टोल्ड द डॉक्टर द होल स्टोरी। डॉक्टर्स ने फिर अकॉर्डिंगली चेक किया तो पाया कि एक्चुअली वही बीमारी है। सो नाउ यू मे थिंक चैट जीपीटी कितना कैपेबल है। चैट जीपीटी मींस एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कितनी ज्यादा कैपेबिलिटीज रखता है अपने अंदर। सो व्हाई डोंट वी यूज इट इन द फील्ड ऑफ टीचिंग? टीचिंग इज आई थिंक द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वर्क, क्योंकि सब कुछ सिखाना पड़ता है हमें। सो दुनिया के सबसे जटिल काम में अगर किसी और की हेल्प मिल जाए तो क्या बुराई है? आप इसको इस तरीके से समझिए कि आप जिस भी स्कूल में, आप जिस स्कूल में भी पढ़ाते हैं, आप जिस सब्जेक्ट के भी टीचर हैं, आपको, आप कल स्कूल जाएं और आपके प्रिंसिपल बोले ना कि मिस्टर विकास आपके साथ ये रहेंगे मिस्टर एक्स वाई जेड जो भी हैं, ये आपकी हेल्प करेंगे। आप जिस भी क्लासेस में जाएंगे आपके लिए लेसन प्लान प्रिपेयर कर देंगे, आपको टेस्ट लेना हो ये क्वेश्चन पेपर बना देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये गेस करके आपको बता देंगे। कैसा लगेगा? कितना प्रिविलेज फील करेंगे ना कि अरे वाह, मेरे साथ मेरा एक असिस्टेंट है, मेरे कई सारे कामों में मेरी हेल्प कर देगा, मेरे वर्कलोड को घटा देगा। तो उससे आप क्या करेंगे, आप उस जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा ना, आप उससे अपने नॉलेज को और बढ़ा पाएंगे, आप नए नए तरीके ढूंढ पाएंगे कि किस तरीके से मैं डिलीवर करूं। सो ये एआई जो है ना, टीचिंग फील्ड में आपका असिस्टेंट बन सकता है इफ यू स्टार्ट यूजिंग इट। So in the realm of education, AI's potential is vast and multifaceted. It offers personalized learning experiences by adapting to individual student needs, preferences, and learning speeds. AI can automate administrative tasks, freeing educators to focus more on teaching and less on paperwork. That is what I was telling. हमारा जो वक्त जाता है ना पेपर वर्क पे, सेशन स्टार्ट करने से पहले लेसन प्लान बनाने में लगे हुए हैं, फिर एग्जाम आ रहा है, क्वेश्चन पेपर बनाने में लगे हुए हैं। अभी समर वेकेशन आने वाला होगा, आप जैसे ही आप मई महीने में इंटर करेंगे, सारे टीचर्स के ऊपर एक प्रेशर आएगा कि नहीं नहीं, असाइनमेंट प्रिपेयर करना है। 1 महीने की छुट्टी होगी, केवीज में अगर आप हैं तो लगभग 45 डेज की छुट्टी होगी, इतना सारा असाइनमेंट देना, आप लग जाएंगे। और आप पूरा बढ़िया से 2 पेज 3 पेज 4 पेज प्रिपेयर करके लेके जाएंगे, अपने एकेडमिक कोऑर्डिनेटर को देंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, चेंज करके ले आओ। आप फिर दोबारा मेहनत करने में लग जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि किसी टीचर ने गलती से पूरा पेपर वर्क दे दिया बच्चे को, किसी ने पूरा प्रोजेक्ट वर्क ही दे दिया, बट एआई कैन हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग एन असाइनमेंट। दैट इज ऑल द थिंग, जिसमें थोड़ा सा पेपर वर्क भी हो, थोड़ा सा याद करने के लिए भी चीजें हो, थोड़ा सा प्रोजेक्ट वर्क भी हो, उनके लिए थोड़ा सा असेसमेंट वर्क भी हो। सो इट विल हेल्प यू। It can also provide intelligent tutoring systems that give student instant feedback. Now, हम लोग क्लास टेस्ट लेते हैं, हमारी एक आदत होती है दैट चैप्टर कंप्लीट हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों से क्लास टेस्ट एक बार ले लेते हैं सो दैट हमें पता चले कि वो कितने पानी में, उन्होंने कितना सीखा। नाउ द प्रॉब्लम इज कि अगर आप हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन भी बनाते हैं क्लास टेस्ट के लिए और आपके क्लास में 40 बच्चे हैं, तो आपको 400 क्वेश्चन चेक करने हैं, 400 क्वेश्चन के आंसर्स चेक करने हैं। दैट इज अ वेरी problematic task.
क्योंकि आगे का लेसन प्लान फिर आपका नहीं बन पाएगा, आप आगे के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, नोट्स नहीं चेक कर पाएंगे, क्वेश्चन आंसर नहीं चेक कर पाएंगे, काफी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आप एआई का हेल्प ले सकते हैं। 10 क्वेश्चंस एआई प्रिपेयर कर देगा आपके लिए, ऑटोमेटेड आंसर्स रहेंगे, एआई चेक कर देगा उनको। बच्चे तो फोन चलाते ही है ना, वो ऑनलाइन आंसर दे सकते हैं, वो दे देंगे, वो खुश होंगे, इनफैक्ट वो अगली बार ज्यादा देंगे। वो कहेंगे कि एक बार और टेस्ट ले लीजिए मैम, या एक बार और टेस्ट ले लीजिए सर, इस बार और ज्यादा अच्छा लेके आएंगे, क्योंकि वो उनके पसंद की चीज है जो आप कर रहे हैं। मोर ओवर, एआई कैन हेल्प bridge educational gaps by providing access to quality learning material and experiences to students regardless of their geographical location. That is also a correct thing. Simon, no, sir. What is the problem, ma'am? Now, AI can help you in increasing the quality of education. I'll tell you how to use AI, definitely. It supports the development of critical thinking. See, I am seeing various no, sir, the response of no, sir. आई हैव ऑलवेज टोल्ड, मैंने और भी कई सारे सेशंस लिए हैं साइबर सिक्योरिटी के भी, एआई में भी मैंने आपको ये बात कहा है, इट कैन बी डेंजरस। सो व्हेन यू आर टेलिंग नो सर, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, दैट इज पॉसिबल, but we will deal with that also. It supports the development of critical thinking and problem solving skills by offering interactive and engaging learning environments. सी, मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारी बात जो है, जो हम लोग 4 से 5 करने वाले हैं आज, जो 1 घंटे हम लोग कर रहे हैं, हमारी बात जो एआई पे है ना, चैट जीपीटी पे नहीं है। व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट जस्ट अबाउट चैट जीपीटी, हमें लगता है कि चैट जीपीटी से मैं कुछ कहूंगा, चैट जीपीटी कुछ आंसर दे देगा, बात खत्म हो गई। बट एआई इज मोर देन दैट ऑल्सो, है ना, एआई में और भी कई सारी चीजें हैं। 1 घंटे का टाइम जो है वो थोड़ा कम पड़ जाएगा सारी चीजों को बता पाने के लिए, कि आप किस तरीके से एआई का यूज करके इंटरैक्टिव क्लासरूम के लिए कुछ प्रिपेयर कर सकते हो, इंगेजिंग लर्निंग इन्वायरमेंट्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। मैं काफी ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, बट मैं इंट्रोड्यूस जरूर करूंगा उसको आज। एज एआई कंटिन्यूज टू evolve, its role in education is expected to grow, leading to more inclusive, efficient, and effective educational experience. See, in the field of education, in today, schools may not be asking that, are you able to use AI? But you can mark my word, after few years, it will be very important to have this line in CV that I am very efficient in using AI. एक वक्त ऐसा भी आ सकता है that AI will be the most important thing. Teacher will have to use AI. Otherwise, the school will not hire you, because it is increasing day by day. Now we have some challenges also here. There is a multitude of challenges that impacts the quality and accessibility of education. Now, let's elaborate it. First one is learning crisis. The COVID-19 pandemic exacerbated the learning crisis with significant negative effect on students' learning, particularly in mathematics and reading. So एक लर्निंग क्राइसिस तो है, इसको दूर करने में टाइम लगेगा, है ना, वो जो 2 साल का लॉस है, हमें धीरे धीरे उसको कवर कर पाएंगे हम लोग। नेक्स्ट इज inadequate early childhood education. What is inadequate early childhood education? Many countries lack proper framework for compulsory pre-primary education, which is crucial for lifelong learning and emotional well-being. Now, for Bihar, for Patna, for India, many schools lack proper frameworks. Pre-primary education के लिए जैसा framework होना चाहिए, उसको
नहीं मिल पाता, दैट इज वाई दे do not get adequate early childhood education. Now, next problem is shortage of high quality teachers. Definitely there is a shortage of high quality teachers, and it is not only in India or in Patna or Bihar. It is written. There is a global shortage of well trained teachers, especially in STEM subjects, which affects the quality of education. Lack of evidence based policies. Decision makers often fail to implement policies that are evidence based or pro equity, leading to foundational gaps in education. Now, how AI can help to address these kind of challenges? AI can provide you personalized learning, AI can provide you administrative automation, AI can help you in data analytics, and AI can give teacher support. See, personalized classes आते हैं AI. Have you ever used Duolingo app? Duolingo is an app जिसका advertisement काफी वक्त तक आ रहा था to learn various kind of languages. So what Duolingo used to do कि Duolingo आपसे कुछ आपको कुछ सिखाता था और रिलेटेड चीजें आपसे पूछता था, और अगर आप सही जवाब देते जाते थे तो वो धीरे धीरे आपके लेवल को इंक्रीज करता जाता था. बट जैसे ही आप गलत जवाब देते थे, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती थी, वो आपके लेवल को रोकता था वहीं पर, सो दैट you take your time and you learn that level properly. So that is a kind of personalized learning which can be provided with the help of AI. What is administrative automation? AI can handle administrative tasks like grading assignments, organizing schedules, generating reports, freeing up time for teachers to focus on teaching, and many more things. Administrating and automation में मैं कुछ ऐसी बातें बोल देता हूँ जो शायद आज की इस मीटिंग में अगर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हो तो उनकी हेल्प हो जाए. सी, आवर सेशन हैज स्टार्टेड, और सेशन स्टार्ट होती है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक काम जो है वो है नए सेशन का रूटीन सेट करना. बहुत मुश्किल हो जाता है. क्लास टीचर किसको बनाना है, कौन से टीचर को किस क्लास में कौन सा सब्जेक्ट देना है, फिर उस सब्जेक्ट को किस तरीके से सेट करना है ताकि पर्टिकुलर प्रॉपर टाइम मिले हर सब्जेक्ट को, प्रॉपर क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए. बहुत मुश्किल काम है. अगर आपको आइडिया नहीं है ना, आप जो आपके स्कूल में रूटीन इंचार्ज होंगे या एकेडमिक कोऑर्डिनेटर जो ये काम करते होंगे ना, आप एक बार उनसे पूछिएगा, है ना. आप उनकी दुखती नस पे हाथ रख देंगे, बेचारे दुख से रो भी सकते हैं, वो इतना दुख वाला काम है वो. बिकॉज आज भी वो काम मैनुअली होता है. पीरियड्स क्लैश कर जाएंगे, कोई क्लास खाली छूट जाएगा. आज भी 10 से 15 दिन लग जाते हैं ज्यादातर स्कूल्स में रूटीन को सेट करने के लिए. बट एआई कैन हेल्प यू देयर. आपको बस एआई को बता देना है दैट मेरे इस क्लास में इतने सेक्शंस हैं, इस क्लास में इतने सेक्शन है, इस क्लास में इतने सेक्शन है, इस वाले सब्जेक्ट को मुझे इतना पीरियड देना है पर वीक. मीन्स आपको सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन उसको दे देने हैं, ओके कर देना है. इट विल प्रिपेयर योर रूटीन. फिर आप बस उसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि क्या सब कुछ सही है. इफ इट इज ओके, गुड टू गो. If it is not, change it as per your need. So it will help you, it can help you. बट हम लोग नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि हमने उतना टाइम नहीं दिया उधर. हमारा टाइम जो है वो आज भी किताबों में जाता है, वही रेफरेंस बुक्स पढ़ते पढ़ते जाता है. बोर्ड पे जाके चूंकि लिखना होता है ना, तो उतनी सारी चीजें याद करनी होती है. बट एआई कैन हेल्प यू. एआई आपके लिए लिख के पीपीटी बना सकता है. आपको बस उस पीपीटी को जाके दिखा देना है. आपके पढ़ाने की स्पीड बढ़ जाएगी, बच्चों के सीखने की स्पीड बढ़ जाएगी, उनके समझने की स्पीड बढ़ जाएगी. और आपको बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने के लिए, कुछ और भी इंटरेक्टिव चीजें कराने के लिए, काफी सारी चीजों के लिए टाइम मिलेगा. टीचर सपोर्ट. AI technologies can support teachers with resources and tools, helping them to adapt to the evolving educational landscape. आपको कई सारी चीजें मिल जाएंगी. अगेन, अगर आपको कोई बुक में नहीं मिल रहा है, आप गूगल करते हो ना, अब आप एआई से पूछ सकते हो, एआई आपको बता देगा कि कौन कौन सी चीज है. नाउ, एआई टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम. ये वही बात है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं आप, ऑटोमेटेड ग्रेडिंग सिस्टम्स का यूज कर सकते हैं आप एआई का से, इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम्स यूज कर सकते हैं, चैटबॉट्स का यूज कर सकते हैं आप फॉर एनरोलमेंट एंड सपोर्ट. दैट मेनी कंपनीज आर नाउ डूइंग. आप
आप अपनी टेलीकॉम कंपनी से जो पहले वाली बात होती थी ना कि 10 रुपए कट गए, आप कस्टमर केयर को फोन लगा देते थे, कैसे काट लिए 10 रुपए, वापस करो। अब नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि आप चैट चैट करते हैं। चैट कौन करता है? चैटबॉट करता है। चैटबॉट पे आपने कंपनी ने सेट कर रखा है कि इस वाली क्वेरी के लिए ये वाला रिस्पॉन्स दे देना, बात खत्म। सो यू कैन ऑल्सो डू इट, यू हैव जस्ट स्टार्ट लर्निंग टू यूज एआई। और आप भी अपने स्कूल के में चैटबॉट एंड एनरोलमेंट सपोर्ट सिस्टम लगा सकते हैं। पेरेंट्स जैसे ही मैसेज करेंगे, चैटबॉट रिप्लाई करेगा उनको, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेडिक्टिव एनालिसिस भी कर सकते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन एंड लैंग्वेज ट्रांसलेशन का भी। स्पीच रिकॉग्निशन का यूज आपका फोन करता है, स्पीच रिकॉग्निशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, इस सब चीजों का यूज आपका फोन ऑलरेडी कर रहा है। यू जस्ट हैव टू सी कि वो कैसे यूज कर रहा है एंड अपने हिसाब से यूज करवाना है फिर उसको। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एआई टूल्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग? Again, enhanced personalization, efficiency in administrative tasks, accessibility, 24/7 learning opportunities, improved engagement, and support for teachers. Now, again, senior teachers जो है, बुरा मत मानिएगा. Now, what we see today, नए teachers आते हैं who have the good knowledge of AI, who have the good knowledge of technology, उनको classes दिए जाते हैं और पहले से एक काफी एक्सपीरियंस टीचर है, 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस है उनको पढ़ाने का। बच्चे तुरंत नए वाले टीचर को पसंद करने लगते हैं और बेचारे एक्सपीरियंस टीचर जो है वो गुस्सा हो जाते हैं कि हम इतना साल से पढ़ा रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, मेरे से ज्यादा थोड़ी पता है उसको। डेफिनेटली नहीं पता होगा, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। बट व्हाट इज मेकिंग दिस डिफरेंस इज द न्यू टीचर इज इंप्रूविंग द एंगेजमेंट। दिस पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, उसने क्या किया है कि नई नई टूल्स का यूज करके क्लासरूम को ज्यादा एंगेजिंग बना दिया है, एंड दैट इज व्हाई नाउ द स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड लाइकिंग दीस काइंड्स ऑफ टीचर्स। उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने एक अच्छा काम किया है। व्हाट वी नीड टू नो, व्हाट वी नीड टू लर्न, दैट हमें भी करना है अब। Now again, personalized learning with AI, you can have an adaptive learning platform, you can have an intelligent tutoring system, personalized recommendations, natural language processing. Now this is a case study. The University of Murcia in Spain implemented an AI-powered chatbot that answers over 38,700 questions with more than 91% accuracy, providing personalized help and guidance to students. This is a case study. जब आपके दिमाग में शायद ये आता हो कि नहीं हेल्प कर पाएगा, तो यूरेशिया स्पेन की एक यूनिवर्सिटी ने ऐसा काम किया। उन्होंने क्या किया, एक चैटबॉट सिस्टम क्रिएट किया जहां पे बच्चे जाके क्वेश्चंस करते थे और चैटबॉट जो है वो उस क्वेश्चन को आंसर करता था, एंड द एक्यूरेसी वाज 91%. द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड वाज 38,708. दैट इज अ वेरी ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो आप समझिए कि आप कितने 5,000 बच्चे भी हो तो आप समझिए कि पर बच्चे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए, और वो क्वेश्चन अगर टीचर के पास आते तो टीचर को कितनी परेशानी होती। Newton's adaptive learning, a study by Newton's found that students using their AI-powered adaptive learning programs improved their test score by 62% compared to students who did not use the program. एक सर्वे में ये भी पाया गया कि जिन बच्चों ने AI powered learning का यूज किया, उनके टेस्ट रिजल्ट्स में 62% का ग्रोथ देखा। ना अगर ये वाला डाटा मैं पेरेंट्स के सामने दे दूं, पेरेंट्स शायद ट्यूशन से नाम कटवा दे बच्चों को कि नहीं नहीं हम फोन दे देंगे, एआई का यूज करने सिखा देंगे, बच्चा का 62% का मार्क्स ग्रोथ हो जाएगा। बट नाउ व्हाट वी नीड टू डू, दैट हमें अपने टीचिंग में एआई को इंक्लूड करना है। एज अ टीचिंग असिस्टेंट, what where AI can help you in grading and feedback, very helpful in lesson planning. Chatbot is a conversational AI model. आप जानते हैं इसके बारे में, हम लोग उस पर बात भी करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन में करना चाहता हूँ इसलिए मैं पीपीटी खत्म कर रहा हूँ। एंड नाउ आई विल स्टार्ट विथ चैटबॉट, Google Chrome. Now, are you able to see my web browser screen? Are you able to see my web browser? Okay, thank you. So, what is here? It is Gemini, the AI tool of Google. एंड आप देख सकते हैं मैंने अभी सेशन स्टार्ट करने से पहले ना ये वाला उससे प्रिपेयर करवाया जेमिनी से।
What I have written, I have just written prepare a lesson plan to teach chapter 1 of chemistry, class 9th. What Gemini has given me? सब्जेक्ट दे दिया उसने केमिस्ट्री, ग्रेड लेवल 9th. टॉपिक क्या है? मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन. देखिए मैंने चैप्टर का नाम भी नहीं बताया, बट द AI हैव ऑलरेडी प्रेडिक्टेड क्या चैप्टर 1 तो वही है. नाउ उसने मेरे लिए चार लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं. Student will be able to define matter. Student will be able to differentiate between solid, liquid, and gas based on their physical properties. Student will be able to explain the states of matter and how they can change. Student will be able to differentiate between physical and chemical changes. Now, एक lesson 45 to 60 minutes का होगा. Material कौन कौन सी use करें? Now, if I am using AI, they will give you a standard format. तो उन्होंने प्रोजेक्टर बोला है, व्हाइट बोर्ड मार्कर ऑन स्क्रीन बोला है, वर्कशीट विद पिक्चर्स एंड वेरियस ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, बलून्स, वाटर, आइस क्यूब्स. ये तीनों चीजें ऑप्शनल रखी हैं, अगर आपके पास है आप कर सकते हैं, ले जाइए. प्रोसीजर क्या करेंगे? 10 मिनट हम लोग करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग, डेमोन्स्ट्रेशन एंड डेफिनेशन ऑफ मैटर. 10 मिनट्स का टाइम लेंगे. एक्टिविटी पे 20 मिनट का टाइम देंगे. स्टेट्स ऑफ मैटर करेंगे, डिस्कस करेंगे एंड चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 10 मिनट का फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड एग्जांपल्स देंगे. असेसमेंट करेंगे 5 मिनट का. फिर डिफरेंशिएशन, एक्सटेंशन सेशन, रिसोर्सेज कौन कौन सी यूज. नाउ डू यू थिंक आप इतना डिटेल्ड लेसन प्लान बना सकते हैं? आंसर इट ऑनेस्टली, यस और नो. क्या आप इतना टाइम देंगे इतना डिटेल लेसन प्लान बनाने के लिए? हाँ, रामनाथ चाह सर, ओके, डेफिनेटली गुड. आयशा मैम, नो. व्हाट हैपेंस ना, हम लोग थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, हर साल एक ही काम करना पड़े, नहीं करेंगे फिर मन ही नहीं करेगा कि कौन बनाएगा तुम लेसन प्लान. दिस इज द थिंग. नाउ what will happen if I ask the same question to ChatGPT? Let's see it. So I copy this and I paste it here in the ChatGPT, and let's see what ChatGPT gives us. See, जेमिनी ने अपने अकॉर्डिंग दिया, ChatGPT ने कुछ चीजें चेंज करके अपने अकॉर्डिंग दे दी. So it was for lesson plan. Let's do something for assessment. So let me tell ChatGPT to prepare a set of 25 MCQs from chapter 1, 2 and 3 of class 10th. So मैंने चैप्टर्स का नाम नहीं बताया, बस साइंस की कौन सी बुक है वो बता दिया, क्लास कौन सा वो बता दिया. नाउ यू सी ChatGPT मेरे लिए क्या कर रहा है, 25 MCQ क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 दे रहा है. ठीक है. नाउ मैंने उसको ये भी नहीं बताया कि क्वेश्चंस कैसे सेट करने हैं, वो टफ होने चाहिए, इजी होने चाहिए, मॉडरेट होने चाहिए, है ना. नाउ जब मुझे ये दे देगा टोटल 25 क्वेश्चन, जब ये प्रिपेयर करके दे देगा मुझे चैप्टर वाइज, तब मैं इसको फिर से कमांड देता हूँ दैट improve the quality of questions and make it more complex. Certainly. Now, अब वो क्या करेगा, क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ा देगा. नाउ आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप इस पे रिलाई कर जाइए, 25 क्वेश्चन इससे दे के पेस्ट कर दिया उधर MS वर्ड में और प्रिंट निकाल के दे दिया, बट आपको 25 क्वेश्चन अब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये 2500 क्वेश्चन पढ़ लेना है कि आपके जो बच्चे हैं, आपके जो लर्नर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनके लर्निंग लेवल के अकॉर्डिंग है या नहीं है, और फिर आपको अकॉर्डिंगली चेंज कर लेना है. सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन पेपर. नाउ यू कैन सजेस्ट मैं क्या दिखा दूं आपको इधर ChatGPT पे.
Let's create a poem. Create a poem on reactivity series of metals. Let's see what happens. What do you see? Science teachers, yes. ChatGPT 3.5 is free of cost. ChatGPT 4.0 is a paid version. तो आप देख सकते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा यूज करना है ChatGPT 4.0 पे जाइए. Now I have asked ChatGPT to create a poem. What it has created in the reactivity series, metals aligned from a potent to mild and a noble design, like knights in armor, they stand in a row, each with its tail, its unique glow. इंग्लिश टीचर्स देख सकते क्या बढ़िया राइमिंग स्कीम लगाई है इसने, है ना. साइंस टीचर्स तो समझ रहे होंगे कि बढ़िया सा रिएक्टिविटी सीरीज का डेफिनेशन दिया है इसने. इंग्लिश टीचर समझ पाएंगे कि क्या बढ़िया राइमिंग स्कीम लगा रखी है इसने. नेक्स्ट, एट टॉप द लिस्ट द किंग reigns supreme, reigning with vigor in an electrifying dream. Test potassium, fierce and bright, igniting with water, a dazzling sight. Again, साइंस टीचर समझ पाएंगे सबसे ऊपर पोटेशियम होता है, पोटेशियम की क्वालिटीज भी लिख रखी है. आप समझिए, आप जो चार्ट से पढ़ाते हैं, ये बाबू याद कर लो, पोटेशियम है, सोडियम है, वगैरह 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 जो भी है, और आप इस पोएम से पढ़ाते हैं. बच्चा याद देखिए चार्ट को ही करेगा, बट इस वाले को देख के समझेगा जरूर. एंड नाउ यू थिंक, यू जस्ट हैव टू सी कि ज्यादा फायदेमंद कौन सा होगा. Let's ask the same thing to Gemini and see what Gemini responds. Prepare a small poem this time, I tell it. Poem छूट गया है. Let's see Gemini क्या करता है. See, यहाँ दूसरा पोएम है, दूसरी AI टूल, दूसरी टेक्नोलॉजी, दूसरा पोएम है. Metals board in order stand, kings of fight the fiery band, potassium fierce at the very top, reacts with water at a mighty pop. चैट जीपीटी ने स्टार्ट किया था, पोटेशियम ऊपर रहता है तो पोटेशियम की ही बात करेंगे डेफिनेटली वो, बट वहां पे पोटेशियम को अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, ऑल्दो वो भी सही है. यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से, यहाँ पे रिएक्शंस के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया गया है. सोडियम नेक्स्ट, अ क्लोज कंटेंडर टू वाटर्स embrace ignites anew, calcium strong and magnesium too, displaces hydrogen with a vibrant hue. Aluminium shines with a coat so bright but fierce beneath in the burning light. Zinc and iron, their reactivity wanes, less eager to fight in the fiery rains. Hydrogen, a gas, and though small in fame, from others it steals their fairy name. Now again, this is how AI can change what you are teaching in a very simple way to a very funny, very interesting, and very enjoyable way. So this is my part, the PPT part and the demonstration part on AI. Now it's your time. You can ask the questions that you are having, and we'll be happy to help you. See, for making PPT by using AI, there are various tools. I have given you two names, Gamma.ai, Tome.app. Other than that, also there are various SlideShare, Google Slides, Canva. This all can be used to prepare PPTs. ChatGPT, just search openai.com on Google Chrome. You will get ChatGPT. For getting the certificate of this season, ask your STNC to talk with Patliputra Sahadia.
प्लीज शो डेमो रिगार्डिंग कंटिन्यू। फिर रूटीन के लिए ना मुझे सारे टीचर्स असाइन करने पड़ेंगे ना, मुझे याद करना पड़ेगा उतना कि मैं 10 टीचर को सब्जेक्ट बांटूंगा, उनको क्लास बांटूंगा, फिर चैट जीपीटी पर टाइप करूंगा। इट विल टेक टाइम। चैट जीपीटी एंड चैट जीपीटी दूसरी कंपनी का है, जेमिनाई गूगल का है। ये बेसिक डिफरेंस है। दोनों कन्वर्सेशनल एआई टूल्स है, दोनों लगभग एक तरीका का काम करते हैं। दूसरी वेबसाइट्स आपको सजेस्ट कर देती है, उन्होंने कुछ लिख रखा है वो सजेस्ट कर दिया। एआई टूल क्या करता है कि वो वेबसाइट से इंफॉर्मेशन चुरा के ले आके आपको दे देता है कि भाई ये चीजें हैं, इनको आप यूज करो, आपको यही चाहिए था, है ना। तो वो जो आपका काम था कि आप वेबसाइट पे क्लिक कर करके देखते थे ना, वो कर रहा है। अगर अभी आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, आपको पीछे देखिए ये वर्चुअल वॉल जो दिख रही है येलो वाली ना, ये एआई का कमाल है। ये मैंने नहीं कर रखा, मतलब किया मैंने ही है, मतलब मेरी वॉल ओरिजिनली ऐसे नहीं है। मेरी फिंगर्स के पास आपको पीछे थोड़ी सी मेरी ओरिजिनल वॉल दिख रही होगी। सो एआई आपको कई तरीके से हेल्प कर देगा ना। मुझे अब पीछे बैकग्राउंड को सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है, जैसा है उसको छोड़ दूंगा। मैं यहाँ से वॉल चेंज कर दूंगा। अगले वाले सेशन में मुझे मन करेगा मैं आपको बीच घुमा दूंगा अपने बैकग्राउंड में। हाउ विल इट हेल्प टू सी, यू आर अ टीचर, यू नीड टू एजुकेट योर स्टूडेंट्स। अगर आपके स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएं, काफी ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे एआई को यूज करने में, तो डेफिनेटली उनको लोग हायर करेंगे। मैंने सिंपल सा वही कहा ना, मान लीजिए आपके स्कूल में ही दो साइंस टीचर जाते हैं, एक को नॉलेज बड़ा अच्छा पता है, दूसरे को नॉलेज के साथ एआई का यूज करना बड़ा अच्छे से आता है। दोनों का डेमो हुआ तो एक गए चौक लेके बोर्ड पे उन्होंने बताया। अगेन वही रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर लेते हैं, एक गए रिएक्टिविटी सीरीज पूरी याद है, पूरी उन्होंने बोर्ड पे लिख के समझा दी, एक गए पोएम के साथ समझा दी। आप बताइए ना किसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? डेफिनेटली उनको मिलेगा जिन्होंने ज्यादा इंटरएक्टिव वे में किया। सो एम्प्लॉयबिलिटी इज directly proportional to skills and the quality you are having। तो अपनी क्वालिटी इंक्रीज कर लेनी, अनएम्प्लॉयबिलिटी खुद खत्म हो जाएगी। आई कैन नॉट से मैम, सॉरी। Yes, SWOT you can also use। SWOT एनालिसिस इज द थिंग जिसका आप यूज कहीं भी कर सकते हो। SWOT एनालिसिस तो आप छोटी छोटी बात में कर सकते हो, ये वाले सेशन को अटेंड करना है नहीं करना है इसमें भी कर सकते हो। वी नीड मोर सेशन फॉर एआई सर, रिक्वेस्ट पाटलिपुत्र सहोदया, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। Do you have any more questions? If you have, please put it in the chat box. ऐसा मैम, we need to be more efficient in this। I am also learning day by day। मैं थोड़ा थोड़ा सीख के आऊंगा और थोड़ा थोड़ा सिखाता रहूंगा आप लोगों को, है ना। दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे हम लोग सभी लोग। हाउ टू इजी मेक वो आपका एनुअल एग्जाम वाला, स्कूल को बोलिए एलएमएस ऐप रखे, वहां मार्क्स पुट कर दीजिए, रिपोर्ट अपने आप जनरेट हो जाती है। हमने वही करा है अपने स्कूल। हाथ से लिखने वाला वो काम हमने बंद कर दिया। देयर आर फ्यू थिंग्स जो टीचर अपने एंड पे नहीं कर पाते। आप चूंकि आप स्कूल के पाठ्य रिपोर्ट कार्ड तो स्कूल के थ्रू जनरेट होती है, तो स्कूल को ही करना पड़ेगा। मंथली वर्क रिपोर्ट यू कैन जनरेट, आप जनरेट कर सकते हैं। सजेस्ट एआई ऐप, देर आर वेरियस एआई ऐप ना, चैट जीपीटी, जेमिनाई तो मैंने ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया। ओला का अपना कृत्रिम है, वो भी आप देख लीजिए। चैट जीपीटी इज द बेसिक फॉर्म, जीपीटी 2 is the advanced, GPT 3.5 is more advanced, GPT 4.2 is the latest one। How to use? Please tell website name, chat GPT, I'm again telling you। How to create video on any topic using AI? See, the first thing is that CBSE has already made some videos on the most important topics। आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी ने भी कुछ बना के रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट एबल टू यूज इट,
कई सारे फ्री सोर्सेज पे अवेलेबल है। जब यहाँ से कहीं से भी आपको संतुष्टि ना मिले, आप फिल्मोरा पे जा सकते हो, फ्री movies.com पे जा सकते हो, फ्री AI पे जा सकते हो, वहां से आप बना सकते हो। कैन बी बिल्ट इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इफ यू कैन डू दैट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग, आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग सब कुछ अगर खुद कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली खुद का एक चैट जीपीटी बना सकते हैं।